उत्कर्ष अभी क्लास था क्या काणे सर का? सर अभी तो लंच था। 1:30 बजे तक के शायद काणे सर ने लिया ना क्लास। सर मुझे नहीं पता सर, मैं तो बाहर था, अभी 2 बजे आया था सर क्लास करने। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। शायद कुछ बच्चों को मालूम रहेगा। काणे सर का सब्जेक्ट लिया है क्या आपने? काणे सर के क्लास में थे क्या कोई बच्चे? अपने क्लास में से है क्या कोई? सर शीतल मैम का क्लास था ब्रेक के पहले। अच्छा, अथर्व बोल रहा है। ओके ओके ओके। काणे सर का इलेक्टिव नहीं लिया क्या किसी ने? क्या एमक्यू में पढ़ाते? अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मेरी अभी बात हुई काणे सर से करके। आई नो दैट कि 1:30 बजे तक के उन्होंने क्लास लिया करके। तो सर अपना चालू करने का प्रैक्टिकल। शैल वी स्टार्ट? ओके अथर्वा, थैंक्स। I will share the screen with you. So the last practical was related to the steering system. So have you calculated these values? Theta, phi, turning circle radius based on the dimensions you got and formula which we have derived in the which we have discussed in the theory class. आप लोगों ने किए हैं क्या? Have you done that? Have you done the calculation for your vehicle? Okay. So some of the students have done. Okay. So I will discuss the difficulty in that particular practical if you have any, but after completion of this particular new practical. Okay. First, let us finish off the new experiment. Then we will discuss the difficulties which are there in the previous calculation. Okay. So I am shifting to the new screen. Good that you have done some calculations. Now let us go to the new. Let us start lab number 3 and then we will discuss the difficulties if you have any. So this is experiment number 3. Now these are connected experiments now. Okay, so this is one. So the aim of the experiment is to determine Surya to determine maximum speed of the vehicle. So maximum speed of vehicle. Okay, the other part I will right now just give that only the heading. Now theory, as you know that the maximum speed of the vehicle can be calculated using various gear ratios and axle ratio. Okay, so I'll just write down for your
for the sake of completeness, the maximum vehicle speed can be calculated by using gear ratios and axle ratios. That is one thing. The power force of vehicle is engine, and power developed by the engine gets transmitted to the wheels. This we know. Now if you actually see the flow of the power from engine, that we have already discussed, but in the form of the block diagram. So the here we are going to discuss this from the lab point of view. Power transmission diagram, let us say just block diagram, I am drawing it. So it is block diagram. So we have the first element in this is, we will discuss element by element. So we are going to have the engine first, that is the first block. Okay, then from the engine it is getting connected to clutch. From clutch it goes to you can say this is the gearbox. You are having gear ratios ranging from first gear to fifth gear. Okay, and one more gear ratio, that is the reverse gear ratio. This we have seen today. Then from here it goes to differential, and then it goes to wheels. Now please try to understand what we have to do here. So it is differential, or sometimes it is called as the axle ratio. So this is basically the wheels, that is the block number 2 is clutch, block number 3 is gearbox, 4th is differential, and 5th is wheel. See what we have to do. Let us say that first of all there are two types of engines. One is the gasoline engine, the other one is a diesel engine. Generally the RPM range, the idle RPM for gasoline engine is, you can say it comes out to be 850 plus minus 50, and for diesel engine this RPM ranges from 750 to plus minus 50. For your kind of vehicle you have to check whether what is the RPM of the engine which is given in this specification. Generally this is the range, and the maximum RPM for gasoline engine, it ranges from 5,500 to 6,500
500. I am giving you the general range of the RPM for the petrol and diesel engine, and for a diesel engine it may range from 4200 to almost 4700 RPM. This is the general range. There are nowadays HSDI engine, diesel engine, which is having more RPM compared more RPM than this 4700 RPM. Okay, so this is one thing. So you have to check the RPM of your vehicle. Then there are two aspects to this. Then you can have the new clutch. Clutch can be new. Then clutch can be old. So what is the difference between the new clutch and the old clutch? If you see that for the new clutch, that means it has not been used so much, the transmission efficiency is 100%. But for old clutch, the transmission efficiency is less than 100%. Okay, this is almost 100%, means I am ignoring that 99.95 and all those things, but this is less than. So in our today's thing, we are going to do the calculation for transmission efficiency of 97% and transmission efficiency of 95%. We are just going to see, because please note that this is the major factor which is going to have the effect as far as the emissions of the vehicle are concerned. Okay, so now these gear ratios you have to choose for your specific model. So choose for specific model which you have selected. That means if you have selected, let us say, Hyundai i20 car, or for that matter you have chosen Maruti 800 or any other vehicle, whatever vehicle you have chose to work on, and that is the thing, you have to get this gear ratios, get these from vehicle specs / company website. वेबसाइट ऑब्लिक नेट से भी आप ले सकते हो, यानी जो भी है आपके पास, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से आप you can get that. Now differential ratio, generally this differential ratio most of the companies they specify, but if it is not available then you may choose the value between, this is the general range, the general range is for this, you have to get it from 4.5 to 5.3. This is most of the time available. If not available, you can get it from the net. नेट में ये आपके व्हीकल को या सिमिलर काइंड ऑफ व्हीकल को आपका मिल जाएगा ये वैल्यू. Then this tire rolling radius. So tire rolling radius. Tire rolling radius you can get it from the tire specs or manufacturer's catalog, that is available online. Manufacturer's catalog. Okay, so these are the values which we will be requiring for this particular experiment or whatever we are trying to do it. Please note that these ratios generally, gear ratios are generally in geometric progression.
तो सर आप थोड़ा सा इसको वेरीफाई भी कर लीजिए कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं. मान लो यू हैव टू, दिस इज द सेकंड गियर रेशियो इज to be equal to G1 and G3. Okay, so this is the geometric, the gear ratios, they are in the geometric progression. So we say that the wheel RPM is NW, the engine RPM is NE. Now we have to use the different formulae to calculate the maximum speed. So I will write down the formula and will tell you what exactly we expect from you in this particular lab. So what calculations which we are going to require. So calculations to be done. तो सर सबसे पहले आपको क्या निकालना है? Will RPM. So NW, that is will RPM, this is equal to NE, ये engine RPM divided by gear ratio multiplied by axle ratio. And if you are doing it for the first gear, for second gear, for third gear, okay, all these values we will be requiring for transmission efficiency of 100%, transmission efficiency of 97%, and transmission efficiency of 95%. How to do it, I will give you the table as well. So पवार सर आप कहाँ थे? 17 मिनट्स हो गए सर, बाद में आप ज्वाइन कर रहे हो. डेफिनेटली इंटरनेट प्रॉब्लम. ओमकार पवार, प्लीज स्पीक टू मी. हेलो सर. यस सर. हाँ बोलो. ये 17 मिनट आप अपने मन से ज्वाइन करेंगे क्या सर प्रैक्टिकल? नहीं सर, मेरा डाटा खत्म हो गया था सर. हाँ बराबर है, डाटा खत्म हो गया, नेट नहीं आ रहा है. सर ये टाइम पे क्यों खत्म होता है सर डेटा? बहुत सारे लोगों का, आपको नहीं बोल रहा सर, बहुत सारे लोगों का टाइम पे डेटा खत्म होता है सर. बहुत सारे लोगों की नींद भी नहीं खुलती है. तो सर आइंदा से थोड़ा सा डेटा का ख्याल रखा करो सर, ज्यादा मत यूज किया करो डेटा. ठीक है सर. Shall I move ahead? ओमकार सुन रहे हो क्या? यस सर, यस सर, यस सर. हाँ तो अभी थोड़ा सा ध्यान दो, जो भी ये काला नीला जो भी कुछ लिखा है वो बाद में पढ़ना. अभी मैं जो बात कर रहा हूं उसके तरफ सर थोड़ा सा ध्यान दो. अगर नींद आ रही है तो थोड़ा सा पानी मार लो चेहरे पे 20-25 मिनट के लिए. ठीक है. यस सर. तो सर नो इट्स ओके, चलता है यार. मैं मुझे भी नींद आ रही है, अभी मैं क्या करूं. ठीक है. So what I am trying to tell you that we have to find out the wheel RPM, और ये ना अपने को डिफरेंट ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के लिए निकालना है. So the formula with transmission efficiency for NW is NW with transmission efficiency will be above formula NE divided by gear ratio multiplied by axle ratio multiplied by transmission efficiency. ठीक है. सो ये आप 100% के लिए तो 1 हो जाएगा, but for 97 and 95 you will require this formula for these two efficiencies.
देन बाद में once you get that, then vehicle speed is easy. Vehicle speed v, that can be calculated as pi d nw divided by 60. That will give you in meters per second. So convert that thing, convert into kilometer per hour, because this is we require. So this diameter d is 2 times of tire rolling radius to be taken from for specific vehicle, or I will say that selected vehicle. जो आपने व्हीकल सिलेक्ट किया है उसके लिए ही आपने ये डेटा लेना है। सर इतनी चीजें आपको समझ में आई क्या, मैंने जितना बताया? इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या सर? ओके चलो, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, we have to make the table. The first table, table 1, is for transmission efficiency. Let us, or will do it. ठीक है चलो, ये टेबल सर, ये तो सबसे पहले आपका सीरियल नंबर रहेगा, देन बाद में सर ये अभी आपका लंबा काम है सर, ये थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि आपको कितने टेबल बनाने पड़ेंगे। ये जनरल टेबल है, फिर मैं आपको बता दूंगा, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा इसको। तो सर ये आपका इंजन आरपीएम हो गया, दिस इज NE। सर ये कहां से वेरी करेगा, मान लो आपका इंजन का आइडल आरपीएम है 750, फिर इसके बाद आपको दूसरा रीडिंग 775, दैट मीन्स 25 के इंटरवल से बढ़ाना है, फिर 800, ऐसे करते 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 सर लास्ट जो रीडिंग रहेगा यहाँ पे, तो ये जो रीडिंग रहेगा ये जाएगा आपका मैक्स आरपीएम तक के। मैक्स आरपीएम, अरे यार मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, मैं लिखने के इसमें, चलो ठीक है। So this is a table which we have to make it. तो सर ऐसा अपने को टेबल बनाना है जिसमें ये डिब्बे में रहेगा आपका सीरियल नंबर 1 2 3 अप टू दैट। जो भी व्हीकल आपने सिलेक्ट किया है उसका आपको आइडल आरपीएम, मिनिमम आरपीएम से स्टार्ट करना है एंड 25 के इंक्रीमेंट से अप टू आपको ये करना है मैक्सिमम आरपीएम। ठीक है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर, आई विल राइट डाउन गियर रेशो। सो यू कैन हैव गियर रेशो 1, ऑल दीज थिंग्स, ये सब के लिए गियर रेशो 1 ही रहेगा। ओके, फॉर ऑल द रीडिंग्स इट विल बी गियर रेशो 1 ओनली। एक मिनट, ये भी लिख लेता हूं, ये दिस इज इंजन आरपीएम, वी हैव रिटन इज एट NE। ठीक है सर, तो ये अपना, देन आपको यू हैव टू राइट डाउन व्हील आरपीएम NW की कितना था व्हील आरपीएम,
750 अगर इंजन आरपीएम है तो गियर रेशो के बाद व्हील आरपीएम कितना रहा। देन बाद में यू हैव टू कैलकुलेट और यू टेक द ट्रांसमिशन और ग्राफ चलो जान दो, ये आप व्हीकल वेलोसिटी आप किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो दिस इज फॉर, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये मान लो गियर रेशो 1 के लिए, सो व्हीकल वेलोसिटी ये आप मान लो 100% के लिए है। देन बाद में यू कैन कैलकुलेट इट फॉर इफ ट्रांसमिशन एफिशिएंसी फॉर 97% के लिए व्हीकल स्पीड क्या है, फॉर्मूले वही यूज करना है, गलती नहीं करना है। देन आपको सेम इसमें कैलकुलेट करना है कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी 95%। ठीक है सर, आपको 3 व्हीकल स्पीड मिलेगा। वन इज फॉर, दैट इज फॉर गियर 1, दिस टेबल विल बी वैलिड फॉर गियर 1। सो ऑल फॉर्मूले आई हैव रिटन, all formulae I have written। एक मिनट सर, ये उड़ा देता हूं। सर ये सब फॉर्मूले मैंने यहां लिख के दिए हैं आपको, तो अभी तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। ये ईयर का ये कर देंगे सर, वो आप चलो सर, जितना हो सकता है मैंने आपको मिटा दिया, वो बाकी के आप जो वर्ड है अभी मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि पलट के अगर सर all these formula I have given over here, all these formula I have given over here। so what we have to do, we have to calculate it for gear ratio 1 के लिए आपको हर एक आरपीएम में व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड कितना आ रहा है। if you take transmission efficiency 100%, if you take transmission efficiency 97%, if you take transmission efficiency of 95%, so likewise make or do calculations for gear ratio 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी गियर्स है आपके व्हीकल को, the गियर्स इन व्हीकल। सर यहां तक क्या आपको समझ में आया क्या? सो लाइकवाइज आपको गियर 1 के लिए एक टेबल रहेगा, गियर 2 के लिए एक टेबल रहेगा, गियर 3 के लिए एक टेबल रहेगा, गियर 4 एंड गियर 5। सो नंबर ऑफ टेबल्स गियर 1 के लिए एक रहेगा, गियर 2 के लिए दूसरा, गियर 3 के लिए तीसरा टेबल, गियर 4 के लिए चौथा टेबल, गियर 5 के लिए पांचवा टेबल। सो लाइकवाइज यू हैव टू मेक द टेबल्स। अगर व्हीकल को 4 ही गियर है, या सॉरी 5 ही गियर है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। नाउ इन whatever vehicles are available on the road, they all are having 5 gears, 5 forward gears। तो अपने को 5 forward gears की चिंता करने की है, फिलहाल रिवर्स गियर की चिंता नहीं करने की है, बिकॉज दैट इज टेकन केयर बाय द फर्स्ट गियर। सर इतना आपको समझ में आया क्या, ये बताइए सर। सो what this will give you the here it will give you Vmax in first gear। Do you know this, sir? Have you understood? Do you have any issue with this? You can do these calculations using Excel।
Microsoft Excel. So use Microsoft Excel or MATLAB for calculations. सर मैंने आपको मैन्युअली करने के लिए बोला, मैं ये आपको बोल रहा हूं कि आप मैटलैब भी यूज कर सकते हो, मैटलैब की एक्सेल शीट आप मैटलैब भी यूज कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज कर सकते हो. सर एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. Sir, I am waiting for your answer. Do you have any doubt? Have you understood? और आपको कुछ डाउट है इसमें बताइएगा सर. प्रज्वल has written no doubt. मनीष यस. चलो ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे थ्योरी क्लास में भी पूछ सकते हो. ओके, so now what is the next step? Next step is we have to plot the graph. Now second stage is plot graph. This is, you can do it using Excel. ठीक है. Now you have got the table. So what we have to do? We have to plot the graph. So graph कैसा रहेगा सर? आप देखिए. This graph will have, so you will have 3 graphs. मैं जस्ट आपको ड्रॉ करके देता हूं. पहला थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके दिया है. ठीक है. The first graph, it is going to have the eta is equals to 100%, eta is equals to 97%, and eta is equals to 95%. तो सर आपको ये जो है ये कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है? NE, that means engine RPM versus speed of the vehicle in kilometer per hour for 100% transmission efficiency. You may have the graph of 1, 2, 3, 4. Make sure that this is your NE maximum, which is here max RPM, and this is your NE, this is idle RPM. So this is going to be your first gear, this is going to be your second gear, this is going to be your third gear, and this is going to be your fourth or fifth. You can do it if you have the fifth gear in the vehicle. Almost all will have the fifth gear in vehicle. So what you have to do, same graph, that means the first, second, third, fourth, 1, 2, 3, 4. Again here this is NE will be here, again the third graph NE will be here, first, second, third and fourth. So what is the purpose of doing this? 1, 2, 3, 4. Why we are doing this exercise? We need to find out. So find the maximum speed. Maximum speed of vehicle, that is the first thing. Second is with transmission efficiency, note the RPM required for maximum speed in each gear. इसका मतलब क्या है? Let us say that the maximum speed which you are going to get here, I am just telling you one thing. Here, let us say that this is, mark this speed, vehicle speed.
let us say that this is 40 kilometer per hour. Then for the same location with transmission efficiency, please find out what is this maximum speed with 97 and what is this vehicle maximum speed with the 95. So you will have the difference in the max speed. With transmission efficiency, what is the maximum vehicle speed you will be getting for same engine RPM, but with the transmission efficiency you should get less less maximum speed of the vehicle with the transmission efficiency. So this is what is expected in this practical. Anybody is having, or this lab, anybody is having any doubt in this lab, in these calculations? सर किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर किसी को डाउट है तो पूछिएगा. So I am waiting for your response. If you have a doubt in this particular lab, you please ask. सर आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. सर किसी को कुछ डाउट है क्या? इतना आप कर सकेंगे क्या सर? ओके चलो, लेकिन ये जो है ये आपको जितने मैंने 2 पेजेस लिख के दिए हैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना है, बिकॉज व्हेन यू राइट डाउन यू हैव टू राइट इट डाउन फॉर योर ओन स्पेसिफिक व्हीकल. मान लो आपने कोई व्हीकल, if you selected, let us say Tata Tiago vehicle, if you have selected that, then for that particular vehicle you have to do this calculation. You means see, we have formed the team, there is a group, so you can get the work divided into 3 कि एक ट्रांसमिशन एफिशिएंसी 100% का करेगा, दूसरा 97 का करेगा, तीसरा 95 का करेगा, एंड दैट शेयर इट in one particular thing, and उसके ग्राफ प्लॉट करिएगा. So you will have the 3 graphs and note down these values. So because this will have the bearing in the next lab कि आपने what we have done for doing these particular calculation. First thing we will come to know that the whatever maximum speed the manufacturer claims, whether theoretically that is possible or not. Okay. If that is possible, then with the usage of the vehicle, the clutch is going to be less effective because there the friction material on the clutch plate is going to get wear out. So with that, what is going to be the effect on the vehicle maximum speed? That is will be the second outcome on this. And why, if there is a difference at all, then why it is, in what way it is going to get hampered? How the vehicle performance is getting adversely affected by that particular variation in the transmission efficiency. So this we will have to discuss. So once you do this, in the next class we will discuss what is the effect and will do the further calculation based on this. It is my request that you please complete this particular practical within 1 week before the next Friday, because once you complete that, the next practical will be totally based on whatever we have done here, because I am going to ask you what is the value for your vehicle and other vehicle. So please be ready with your data because you have to do the Excel calculation. All the formulas I have given to you here, सब formula मैंने लिख के दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ इस पे डाउट आएगा. अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप थियरी के क्लास में भी पूछ सकते हो, so I can answer your questions. But see, what is going to be the learning from this particular exercise is we come to know that which kind of engine, what is the minimum RPM, what is the maximum RPM, then what are the gear ratios, what are the axle ratio for that kind of vehicle, which differential में कितना axle ratio होता है, and the टायर के स्पेसिफिकेशन. तो ये सब चीजें सर आपको अपने व्हीकल स्पेसिफिक इसके लिए देखना है. तो यू विल कम टू नो कि कैसे स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करते हैं,
कहाँ लिखे रहते हैं, ये आरपीएम कहाँ से मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क, अदरवाइज we will discuss the previous practical. So if you have any difficulty in the previous practical, तो सर आप वो मुझे पूछ सकते हैं। Sir, should we take average of all four wheel turning radius to check it with the company's data? नहीं सर, ये प्रद्युम्न ने ये क्या करना है मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा। सर एवरेज किसी का भी नहीं करना। सर आर यू एबल टू सी द स्क्रीन, से यस और नो? यस। तो सर ये जो टेबल आपने बनाया है, ये जो एक्सेल शीट में बनाया है, आपके पास कंपनी का वैल्यू है मिनिमम टर्निंग सर्कल रेडियस का। सो ये टेबल में देखिए कि यूजुअली थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 70 डिग्री के आसपास देखिए, दैट वैल्यू इज क्लोजर टू विच पर्टिकुलर रो। दैट मीन्स ये जो रो है यहाँ पे, तो मैं ये I can't write on this particular sheet, but चलो मैं ये एक नए शीट पे आपको लिख के बताता हूँ कि ये जो वैल्यू आपने निकाली है, तो जस्ट मैं आपको समझा के देता हूँ कि अपने को एग्जैक्ट करना क्या है, और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल जानकारी भी दे दूं कि ये डिटरमिन कैसे करते हैं। थोड़ा सा होल्ड कीजिए सर, मुझे जस्ट पेज चेंज करना पड़ता है। एक मिनट। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2। सर आपने क्या किया है, आपके पास ये है थीटा फाई दोनों है, आपका ये टर्निंग सर्कल रेडियस, इनर फ्रंट व्हील, देन आउटर फ्रंट व्हील, देन इनर रियर व्हील, देन आउटर रियर व्हील। तो सर ये थीटा की वैल्यू हमने वेरी की, देन फाई की बी बाय एल इक्वेशन में। मान लो सर कि यहाँ जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल दैट थीटा 35 है और ये आपका वैल्यू 30 है, मैंने ये, या लेट अस से थीटा 36 हो गया, ये वैल्यू हो गई 32, ठीक है, तो 68 के करीब करीब, या आपका थीटा 38 हो गया, ये वैल्यू हो गई 42, तो अभी ये 70 के ऊपर गया। तो सर ये जो रो में है, तो यू हैव टू चेक दिस वैल्यू 1 2 3 4, सो ऑल दिस 1 2 3 4 1 2 3 4, all these dotted values you need to check it, these values to check with the manufacturer's specification। अगर मैन्युफैक्चरर बोलता नहीं है कि इफ ही ओनली मेंशंस दैट टर्निंग सर्कल रेडियस ऑफ व्हीकल इज लेट अस से 3.42, और मान लो कि ये आपकी यहाँ वैल्यू है 3.5, आई एम जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू, ये 3.5, आउटर फ्रंट व्हील का वैल्यू है ये 3.9, देन 4, देन 4.2, मान लो ये वैल्यू है 3.6, okay, then this is given as a 4, this is 4.1, this is 4.3, for example I am giving you, so this is 3.8, then 4.2, let us say 4.5, let us say 4.8, these are just example. So this is very near to this particular value, so select this value, the other values will be this, and your theta plus phi, this is the maximum angle of locking for the front wheel and the inner front wheel and outer front wheel,
because you cannot have the exact value because the manufacturer is only saying that it is 3.2 meters. So closely watch this table and try to match the value from the table to this value given specification. So try to match the value with given specs. Okay, and then you report that कि आपका जो थीटा इतना रहेगा and phi इतना रहेगा for that particular vehicle. This is one way of doing it theoretically. In the company also they do it. There is other way of finding out the checking out whether this is 35 or this is 30. So what is done? There are experimental way to check it. Experimental way में क्या करते हैं? These are, let us say, 2 plates. ये एक छोटी प्लेट होती है and this is the outer plate. That means if you see this, then in the side view you will find that this is the bigger plate and this is the smaller plate. So this is outer plate is fixed and inner is rotating. Now here what is done, यहाँ एक 0 मार्क है और यहाँ भी एक 0 मार्क है and ये भी 0 मार्क है and this is graduated. That means इसमें ये डिग्रीज में ये graduated रहती है. Okay, and this is the pointer. When nothing is there, this pointer will point to, let us say, ये 0 मार्क पे pointer point करेगा. सर ये समझ लीजिए ये actual, this is followed in actual testing of the vehicle. So ये ऊपर की जो plate है, it is movable. The lower plate is fixed. Now what is done? All wheels of the vehicles, they are aligned properly. So all wheels are aligned properly. ये सर सब व्हील को प्रॉपर अलाइनमेंट करके दी व्हीकल फ्रंट व्हील्स are mounted on these plates. यानी क्या करेंगे सर कि ये जो प्लेट है ये आपका आउटर और ये इनर, इसके ऊपर सर व्हीकल को ऐसा माउंट करेंगे फ्रंट व्हील उसका. दिस इज द व्हील and make sure that the 0 mark is as it is. Now the vehicle is started in the standstill condition and then you rotate the steering. So if you rotate the steering, then you may see that there is a deflection of लेट अस से ये साइड में अगर उसने ये किया तो ये डिफ्लेक्शन रहेगा. ये मार्क कहाँ कोइंसाइड होता है, ये आपका 0 0 और ये इज दी यू कैन से एंगल ऑफ लॉक ऑफ फ्रंट व्हील. ओके, तो ये आपको थीटा मैक्स बोलो या फाई मैक्स बोलो, ये आपको थीटा मैक्स या फाई मैक्स दैट कैन गिव यू. दोनों व्हीकल के दोनों फ्रंट व्हील पे, ये फ्रंट व्हील के नीचे ये प्लेट लगा देते हैं, इसका सेटिंग कर देते हैं. देन दे स्टार्ट द व्हीकल एंड देन दे ट्राई टू rotate the vehicle. So this way also you can check
what is the maximum theta and phi. Have you understood this, sir? This is actually followed. This method is followed in the industry. The experimental checking of theta and phi. वो ज्यादा कैलकुलेशन करते नहीं है. They do the calculation only when they have to actually simulate the vehicle. But if you have already got the vehicle, then they check it by this method. This becomes see, ultimately in automobile industry, the people have the faith that the everything, whatever you do it on the paper, it should finally go to the product. Okay, so have you understood, sir? किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या previous lab में? Can you do the calculation and can report it for your vehicle? Sir, any doubt है? Any doubt in this? Okay, चलो, अगर सर किसी को डाउट नहीं है तो हम यहाँ पे रुकते हैं. आप कैलकुलेशन करिएगा. नेक्स्ट लैब जब नेक्स्ट फ्राइडे, आई एम गोइंग टू आस्क यू द वैल्यू ऑफ दिस थीटा एंड फाई. दैट इज वन थिंग. And second is the maximum vehicle RPM in first gear, second gear, third gear and fourth gear, because based on that we will build up the next lab. ठीक है? So we'll stop here. I'll stop sharing. Now, if you do not have any doubt, it is over from my side. You may leave the meeting. I will just post these handwritten notes to our group for your reference. Yeah. Thank you.